Hi everyone, welcome to goclasses. In this session, we are going to discuss some serious concerns from GATE 2026 aspirants. You may have also felt it if you attempted GATE 2026 exam for any branch, not only for computer science or DA. DA exam will be conducted on 15th, but for any branch, the GATE 2026 exam that has been conducted. So there were some serious concerns. All over the social media, students are discussing their concerns. You can find many posts related to the things that we will discuss in this session. Okay. We have also invited some students, some GATE 2026 aspirants who wanted to share their experience. We have Imran with us, we have Mona Lisa with us, and Swarnama Mukherjee with us. So these are GATE 2026 aspirants who prepared for GATE 2026 for the last 1 year, 2 year. They have prepared. They have spent a lot of time in their preparation. They have done hard work, and because of these concerns, because of the experiences that they had in the GATE 2026 exam, before and after and within, basically during the GATE 2026 exam, so they are disheartened, I can say. And that's why I've invited them so that they can share their experience. Okay. So before we talk to these students, let me share with you basically what is the issue here. So let me share. Let me see if the audio, video, everything is clear in the chat. Okay. So let me discuss with you what was the actual issue here. So basically, most of the aspirants, most of the GATE 2026 students, they are saying that at the exam center, there was no frisking, there was no checking. They were checking admit card, Aadhaar card. They were also checking, whether your pen is transparent or not. But they were just asking, do you have mobile phone? If you say no, then they will allow you to go. There is no checking whether you have the mobile phone or not. See, there are many exam centers all over the India, and if you don't check whether some student has mobile phone or not, if you don't really check using metal detector or using your hands, basically if you don't check, then many students all over the India, they can take the mobile phone in the exam room, and the invigilators in many exam centers, the invigilators, they were also just sitting in their chair. And some student told me that at his exam center, the examiner was basically sitting in the chair and sleeping. So this type of invigilation, plus you are not checking whether the student has carried some mobile phone in the exam room or not, then how do you ensure that the deserving students will get the deserving rank and the non deserving students do not get the top rank? So how do you make sure? See, this is a AI time that is going on nowadays. You cannot conduct any exam, subjective or objective, any exam you cannot conduct unless you make sure that no aspirant takes mobile phone in the exam room. It's the very basic common sense, I think. And at most of the exam centers, this was not checked. I can personally share my experience, Imran, Swarnava, Mona Lisa. So I also went to attempt GATE CS 2026 Set 1. And they at the entry, they checked admit card, Aadhaar card, and they also checked my pen, that is the pen transparent or not. My pen was not transparent, so they told me that okay, leave it in this box. So I left it there, and they told me that inside you will get another pen which will be transparent. So but they did not ask me anything about the mobile phone, anything about any other electronic gadget. They did not ask me, they did not check. They just checked whether my pen was transparent or not, and they allowed me to go inside. And at that time also I was thinking that so many aspirants who are coming to this exam center, if one or two students can take, let's assume, mobile phone inside the exam room, and they use the chat gpt. Chat gpt has made things very simple. Out of 65 questions, easily 60 questions or maybe more than 60 questions chat gpt can answer. All you have to do, you don't even have to type in the mobile, you don't even have to type to the chat gpt that this is the question.
You just have to, just have to click the photo, and you just give it to the chat gpt, and the chat gpt will automatically, scan the text in your photo, and it will give you the answer. So I think for each question, I think hardly 2 minutes it will take. Okay, so maybe within 2 hours you can really solve like maybe 60-65 questions you can solve within the 2 hours. Okay, so this is a really concerning situation. I'm not putting any blame on anything. Okay, I don't have evidence also. That is the reason I'm just sharing what I am seeing on the social media and my own experience, that I was not checked for the mobile phone. Very simple. Okay. This video is not to make anything sensational. Okay. We also did not put any, I can say, clickbait thumbnail. You can see in the thumbnail also, we are not calling anything sensational. Basically, okay, just to clickbait, okay, just to click the video. It's not about that. So it's purely about what students are going through, what students are discussing all over the social media. Okay, so I think now we can talk to our students who appeared for gate 2026, who prepared for gate 2026, and who are disheartened by the management, by the gate 2026 management, or I can say how the gate 2026 exam was conducted so far. Okay, so let's go one by one. Imran. सो सर, हेलो एवरीवन। सो उस दिन ऐसा हुआ था कि मैं पूरा टाइम से पहुंच गया था हॉल। तो वहां पर मैंने देखा कि जस्ट ऐसा कोई मतलब स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं हो रहा था। जस्ट दो एंट्री था। तो हम लोग गए ऊपर। सो जस्ट एक सिक्योरिटी गार्ड था, और वो बस पूछ रहे थे कि अगर किसी ने कुछ लाया हुआ है तो यहाँ पर रख दो। एक बॉक्स था वहां पर साइड में। पर जब मैं लास्ट ईयर गया था 2025 में, तब मतलब वहां पर बायोमेट्रिक था, लाइव फोटो भी था। तो लास्ट ईयर के मतलब कंपैरिजन में इस साल मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था कि स्ट्रिक्ट चेकिंग। और लास्ट ईयर में हमें बेल्ट भी अलाउड नहीं था स्टूडेंट्स को, और मतलब बॉयज को। और लड़कियों को मतलब साफ पूरा चेकिंग हुआ था, इयर रिंग्स वगैरह सब। लेकिन इस साल कुछ नहीं हुआ वैसे वो सब। ओके, ओके इमरान, सो यू आर सेइंग कि गेट 2025 में जो है ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग थी। स्ट्रिक्ट था। जो बायोमेट्रिक लाइव फोटो सब था। सब था, हम्म, लेकिन इस बार मतलब इस बार तो ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि जी। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, वैसे वैसे जी जो सर। एआई है वो ज्यादा स्ट्रांग बनता जा कम रहा है। हो रहा है। ठीक है, अब तो जेमिनाई और चैट हम्म। जीपीटी और उसके हम्म। अलावा पता नहीं कितने 40-50 एआई आ रखे होंगे। तो हम्म। आप उनको सिर्फ फोटो क्लिक करके दो, वो आपको आंसर दे देते हैं। हम्म। आपको टाइप करने की भी जरूरत नहीं है। हम्म। मतलब as the time is progressing, हम्म। it is very, it's like mandatory, 100% mandatory, that you do not allow any student without checking whether they have mobile phone or electronic gadget or not. And यस सर। many smart gadgets are also coming. If someone is rich, then they can, they don't even have to carry the mobile phone. Maybe they can carry some other smart gadget maybe. सर, So और जो सर वेबकैम था वहां पर, हर सिस्टम में एक वेबकैम रहता है, वो भी काम नहीं कर रहा था, मतलब वो भी ऑन नहीं था। ओके, हाँ, मेरे भी सिस्टम के ऊपर सामने ही बिल्कुल एक वेब कैम था। हम्म। और आई एम नॉट श्योर कि वो ऑन था कि नहीं था, लेकिन उसके ऊपर कोई लाइट या कोई कोई जो ब्लिंक या कुछ ऐसा, मतलब कोई भी लाइट उसके अंदर ऑन नहीं थी। हमारे तो वहाँ वो सर एक्सटर्नल था, एक्सटर्नल वेबकैम था। अच्छा, तो वो ओके, तो मतलब किसी कहीं मतलब पड़ा हुआ था साइड में। ओके, हर ओके, सिस्टम में अच्छा, ऐसा ही आपका तो वेब कैम साइड में ही पड़ा था। साइड में पड़ा था, अच्छा, ओके, 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 एक्सटर्नल वाला। ठीक है, ठीक है। तो इमरान, आपने आपने लिंक्डइन के ऊपर भी ये चीज, जी ये सर। पोस्ट जो है पिछले कुछ दिया दिनों से था। आप शेयर भी कर रहे हो। जी सर। जिस दिन गेट एग्जाम आपका हुआ, गेट गेट सीएस का एग्जाम आप दे के आए, उस दिन भी आपने पोस्ट किया। जी। आपने मुझे भी टैग किया था, मैंने भी जी देखी थी सर। वो पोस्ट। उसके बाद उस टाइम मुझे पता चला कि लोग क्या क्या फेस कर रहे हैं। फिर मैंने भी सर्च किया सोशल मीडिया के ऊपर, रेडिट के ऊपर मैंने भी सर्च किया। बेसिकली अगर कोई भी गेट 2026 अथॉरिटी, आईआईटी गुवाहाटी का कोई भी अथॉरिटी, या कोई भी प्रोफेसर, या कोई भी गेट अथॉरिटी के अंदर कोई भी अगर ये देख रहा है वीडियो, तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ रेडिट के ऊपर जाके ये सर्च कर लो, चीटिंग इन गेट, ऐसा कुछ सर्च कर लो, चीटिंग गेट, ये दो वर्ड आप रेडिट के ऊपर डाल दो या गूगल के ऊपर डाल दो। आपको बहुत सारी पोस्ट मिल जाएंगी, जिनके जो पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट भी आपको बहुत सारी मिलेंगी, उनके नीचे कमेंट्स भी आपको बहुत सारी मिलेंगी, उनके ऊपर अपवोट भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितने कितने स्टूडेंट्स इस चीज को बात कर रहे हैं, कितने और स्टूडेंट्स ने इस चीज को फेस किया है। सेंटर के नाम के मतलब नाम भी है वहाँ पर, कौन कौन सा सेंटर में क्या क्या हुआ है।
हाँ, जो भी स्टूडेंट पोस्ट कर रहा है या कमेंट कर रहा है, वो सेंटर का नाम भी साथ में लिख रहा है कि ये मेरा सेंटर था, यहाँ पे था, इस स्टेट में था, इस डिस्ट्रिक्ट में था, ये पूरा लिखा हुआ है। ओके। तो इमरान, आपने जो लिंक्डइन के ऊपर आपने या फिर आपने मेल भी किया है अथॉरिटीज को, आपने जी पोस्ट जी। तो किया है, 2 या 3 पोस्ट किया आपने लिंक्डइन पे, उसके जी, अलावा आपने अथॉरिटीज को मेल मेल किया है? किया है मैंने, आईआईटी गुवाहाटी, आईएससी, मतलब जो जो है इंस्टीट्यूट, सभी को मैंने फॉरवर्ड कर दिया है मैंने। कोई आया, कोई रिप्लाई? नहीं सर, अब तक नहीं है। अच्छा, आपने ये सारे प्रूफ जो स्क्रीनशॉट थे या जी सर, जो ये सब दिए? अटैच कर दिए। ओके ओके, आई थिंक ओके, लेट्स सी। The purpose of this session is just to make sure that the gate conducting authorities, they get to know what happened in gate 2026. I think it might have happened that they did not instruct the exam centers to check that, okay, that check the student maybe using metal detector. If there was no metal detector, then also they can check, right? They can just check with the hands, so they can make sure that a student does not carry the mobile phone. But I think the gate exam centers, they were not instructed, they were not checking. And so let's hear from Swarnava Mukherjee. What was your experience? सर, जैसा इमरान भाई ने बोला कि एकदम सेम ही एक्सपीरियंस था कि मतलब कुछ पूछा नहीं, कि मतलब बस पूछ रहे थे कि आपके पास कोई मतलब सस्पिशियस चीजें तो नहीं है तो अगर रख दीजिए। तो अगर कोई बोलेगा कि नहीं है तो वो आराम से चला जाएगा। और मतलब हम लोगों का सेम सेंटर टीआईएफआर में भी पड़ा था। मतलब दिसंबर में मैं टीआईएफआर में सेम सेंटर में ही देने गया था एग्जाम। तब उस टाइम अच्छे से मेटल डिटेक्टर्स वगैरह से चेकिंग किया था, फिर पॉकेट्स वॉकेट्स चेक किया था कि कुछ कैरी कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन इस टाइम पे कुछ चेकिंग नहीं हुआ, बस वो पूछ के ही छोड़ दे रहे थे। और मैं जब एकदम एग्जाम खत्म होने के बाद जब वॉशरूम जा रहा था, तब मैंने देखा कि एक लड़का मतलब बाथरूम से अपना मतलब अच्छे से मोबाइल को पॉकेट मतलब वो पेपर से मतलब रैप करके रखा था और उसको निकाल रहा था। अब शायद हो ही सकता है कि एग्जाम सेंटर में शायद जैमर था, शायद उसका नेट काम नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से कि मोबाइल फोन को मतलब एंट्री नहीं देना चाहिए उतना, मतलब बाथरूम तक वो लेके जा पा रहे तो उतना अलाउ नहीं करना चाहिए। अगर जैमर वगैरह है भी तो नहीं अलाउ करना चाहिए। आपने आपने ये देखा कि मतलब आपने ये खुद से हाँ सर। देखा कि एक स्टूडेंट बाथरूम में मोबाइल फोन यूज कर रहा था? यूज नहीं, मतलब एग्जाम खत्म हो गया था, मैं उसके बाद अच्छा वॉशरूम गया था। तब मैं देख अच्छा, रहा था कि वो निकल रहा था, मतलब अच्छे से रैप करके रखा था मतलब पेपर में। ओके ओके, तो मतलब वो बाथरूम तक तो कम से कम मोबाइल फोन लेके गया था। हाँ सर। अब वहां तक भी अब अलाउ नहीं फर्स्ट होना में चाहिए, जब हम क्योंकि लोग। क्योंकि आप जहां से गेट से एंटर करते हो वहां पे चेकिंग होती है। जो मेन गेट होता है हाँ एग्जाम सर। सेंटर का, वहां पे चेकिंग होती है, वहां पे आपका एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, ये चीजें चेक की जाती हैं। बाथरूम हाँ तो सर। आपको एग्जाम रूम के बगल में मिल जाएगा, वहां पे तो कोई चेकिंग हाँ नहीं है। सर। अगर एग्जाम रूम तक जा सकता है मोबाइल, तो वो तो एग्जाम रूम के अंदर भी जा सकता है। हाँ सर, एकदम जा सकते हैं। और हाँ। फर्स्ट में जब कोई सोचिए कि 1 आवर के अंदर कोई वॉशरूम जाना चाहता है, तब इन्विजिलेटर साथ में जा रहे थे वॉशरूम पे। लेकिन जितना मतलब लेट हो रहा था, मतलब एग्जाम का जितना मतलब खत्म होने का जितना पास आ रहा था एग्जाम, तब एक मतलब इन्विजिलेटर्स लोग मतलब साथ में नहीं जा रहे थे, मतलब नॉर्मली छोड़ दे रहे थे कि आप जाइए और लौट आइए वॉशरूम से। मतलब उस टाइम पे अगर कोई जाएगा मतलब मोबाइल यूज कर सकता है। ओके ओके, ऐसा मतलब पर्टिकुलरली मेरे एग्जाम सेंटर पे ऐसा नहीं था कि इन्विजिलेटर जो है वो वॉशरूम तक साथ में जा रहा है, ऐसा नहीं था। कोई भी अगर जाना चाहता है तो वो कितनी भी बार कभी भी जा सकता है, ऐसा मतलब एक स्टूडेंट ने भी मुझे बताया था कि उसने उस स्टूडेंट ने अपने एग्जाम सेंटर पे देखा कि एक जो स्टूडेंट है वो 4-5 बार वॉशरूम गया था, तो एग्जाम के ड्यूरेशन में। ओके, सो सोनो, एनीथिंग एल्स? हाँ नहीं सर, बस यही सर। ओके और ओके। फिर वो नॉर्मल डिस्कशन वगैरह तो मतलब एग्जाम में थोड़ा बहुत हो रहा था, वो तो एक लूप होल है, कुछ नहीं कर सकते उसका। मतलब इन्विजिलेटर्स लोग मतलब घूम रहे थे, मतलब रोमिंग अराउंड कर रहे थे, लेकिन जब मतलब आसपास नहीं होंगे तब तो थोड़ा बहुत डिस्कशन कर ही रहे थे लोग। सी, अगर कोई अगर मान लो 4-5 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं करी या अच्छी प्रिपरेशन नहीं करी, वो अगर साथ में बैठ के अगर आपस में डिस्कस कर भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो भी ज्यादा नहीं हो हाँ। पाएगा। ठीक है, गेट एग्जाम हाँ जो है सर। इतना कॉन्सेप्चुअल एग्जाम तो है कि आप अगर 10 लोगों को बिठा दो जिन्होंने गेट की तैयारी नहीं करी, या 10 लोग जो इंडिविजुअली मान लो कि 20 या 25 नंबर ही ला सकते हैं, तो वो 10 लोग साथ में बैठ के भी है ना 30-35 से ज्यादा नंबर नहीं ला पाएंगे। तो हाँ इतना तो सर। है, इतना तो एक गेट एग्जाम के जो क्वेश्चन है उनका लेवल है, कॉन्सेप्चुअल लेवल है कि वो। लेकिन सबसे ज्यादा जो कंसर्निंग चीज है वो ये है कि अगर मान लो उन उन 5 स्टूडेंट्स के अंदर जो डिस्कस कर रहे हैं, अगर उनमें कोई एक ने अच्छी तैयारी कर रखी है, तब एक इश्यू हो सकता है। सेकंड, तो बेसिकली वहां पे इन्विजिलेटर को
स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, या फिर ऐसा होना चाहिए कि भाई हर हर कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर, हर 10 स्टूडेंट्स के ऊपर एक इन्विजिलेटर तो होना ही चाहिए। और लेकिन पर्टिकुलरली जो सबसे ज्यादा कंसर्निंग चीज है पिछले कुछ सालों में, पिछले 2-3 सालों में या इस साल, वो बेसिकली ये है कि मोबाइल फोन अगर कोई अंदर ले गया तो बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है। यस सर। ओके। सो जस्ट स्वर्णवा ने जो बोला, सो ऐसा भी तो हो सकता है कि पूरा मतलब एग्जाम के टाइम वो फोन उसके पास ही था, क्योंकि हमारे सेंटर में भी वॉशरूम मतलब से वो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ही रहता है, मतलब साइड में। ओके। और क्या जेमर्स लगे होंगे, ऐसा कुछ मतलब कि जेमर्स लगे होंगे? क्योंकि मैं अभी एक और जैसे मोनालिसा के पास आते हैं, सी हैज सम एक्सपीरियंस टू शेयर, एंड फ्रॉम दैट आई थिंक वी कैन इन्फर कि शायद जेमर्स भी नहीं लगे थे। तो लेट्स हियर फ्रॉम मोनालिसा। यस। सर जैमर्स नहीं थे इतना, तो मतलब मैं जब सेंटर में एंटर कर रही थी तो तब उन्होंने कुछ चेक नहीं किया, मुझसे तो पूछा भी नहीं फोन है कि नहीं। जस्ट एडमिट कार्ड देखे, आधार देखे और बोला कि लैब पता है क्या, तो मैंने पहले ही डोर में लैब नंबर देख लिया था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है चले जाओ। पेन्स वगैरह भी कुछ भी चेक नहीं किया था मेरा। और फिर मेरा सेट मुझे थोड़ा लेंदी लगा तो मैं एग्जाम के टाइम इधर उधर देख नहीं पाई, लेकिन जब निकल रही थी मेरे सामने ही 3-4 लोग एकदम ग्रुप बना के निकल रहे थे, 3-4 लड़के। तो मैंने उन्होंने डायरेक्ट निकला, उनके हाथ बैग्स नहीं थे शायद उनके पास, उन्होंने हाथ में फाइल था, उनका फाइल लेके निकले। और फिर बाहर उन्हें उन्हें उनका कुछ दोस्त मिल गया, तो मैंने खुद देखा कि उन्होंने वो कार्गो वाले जो पैंट्स होता है ना, बहुत सारे पॉकेट वाले, वहां से उन्होंने फोन निकाला और 2 जन तो मेरे सामने ही निकाला, बाकी का पता नहीं। और उनके दोस्त थे वहां पे सेकंड शिफ्ट वाले, उन्हें दिखा के बोल रहे थे कि तुम भी लेके चले जाओ, बहुत आसान, मतलब चेकिंग नहीं हो रहा है, बहुत आसानी से तुम लोग देख पाओगे। और पिछले साल भी मैंने गेट दिया था टीसीएस में, वहां उन्होंने उस साल पूरा मेटल डिटेक्टर से चेक किया था। मेरे गले में एक सिल्वर का चेन है, तो वो भी उन्होंने निकाल के दिखाने को कहा कि क्या है दिखाइए ठीक से। इस बार उन्होंने पूछा तक नहीं कि फोन है कि नहीं। और ओके। मतलब और उन्होंने आपने जिस तरीके से कहा कि आप फोन ले, दोस्तों से कि फोन लेके जाइए आसानी से देख पाएंगे, तो उससे तो समझ में आ रहा था कि उन्होंने देखा होगा, और जैमर्स है तो कैसे देखेंगे। हाँ, क्योंकि आपने खुद ये चीज देखी कि एग्जाम, आप जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ, एग्जाम रूम से आप निकले, तो आपने देखा कि वो 2 स्टूडेंट को आपने देखा कि वो अपनी कार्गो की पैंट से मोबाइल निकाल रहे हैं, और वो नेक्स्ट शिफ्ट के अपने फ्रेंड्स को बता भी रहे हैं, कि हंसते हुए बता भी रहे हैं कि भाई कि कोई चेकिंग नहीं हो रही, आप भी लेके जाओ, आप भी हाँ करो। हाँ आई मतलब अगर जैमर्स लगे होंगे तो वो स्टूडेंट्स अपने दोस्तों को बोलेंगे कि भाई कोई फायदा नहीं मोबाइल ले जाने का, रिस्क क्यों लो? हाँ भाई जब जैमर्स लगे हैं, आप यूज ही नहीं कर सकते, हमें कोई फायदा नहीं हुआ, तो वो अपने दोस्तों को भी एक मतलब उस चीज का बेनिफिट नहीं बताएंगे। तो अगर वो हंसते हुए बता रहे हैं एकदम बिल्कुल, मतलब ऐसे क्या कहते हैं, सेखी भगारना मतलब, तो अगर वो ऐसे बोस्ट कर रहे हैं कि भाई कि हमने भी लेके गए, कुछ चेकिंग नहीं है, तुम भी लेके जाओ, बेनिफिट हो रहा है, तो ओके। सो और दिस इज सर रियली समथिंग। जो वेबकैम्स थे वो भी शायद काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि मेरा कंप्यूटर में एक्सटर्नल वेबकैम था और वो गिरा हुआ था साइड में ऐसे टूट के। तो काम तो नहीं कर रहे होंगे, अगर होते तो शायद ठीक ठाक से लगे हुए होते, वो ठीक से लगे भी नहीं हुए थे। ओके। मेरे क्योंकि जैसा था, मैंने जैसे बोला था वही है सेम। क्योंकि अगर वेबकैम भी अगर काम कर रहा हो, चलो ठीक है, मान लो मोबाइल भी स्टूडेंट अंदर लेके चला गया, अगर वेबकैम भी अगर सिस्टम के ऊपर लगा हुआ है और वो काम कर रहा है, तो उससे थोड़ा वेबकैम की रिकॉर्डिंग देख के थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि ये स्टूडेंट जो है वो, कि ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है या फिर ये क्वेश्चन मतलब चीटिंग कर रहा है, तो उससे भी आइडिया लग जाएगा। अगर वेबकैम ही काम नहीं कर रहा तो फिर तो ये तो एक होता ना कि बहुत अलग अलग लेवल्स के ऊपर ये केयरलेसनेस थी। ओके। सो one thing I want to request to all the students, that you just make sure that authorities get to know about it. I'm not putting any blame on anyone, because gate exam, so far in the last maybe 40 years, gate exam has been, I can say, cheating free exam. We have never heard of any cheating, I think, right Imran, Mona Lisa, Swarnava?
Yes, We sir. have never heard about Yes, sir. any such Yes, issue sir. in the gate exam. So gate exam has been one of those exams which has been, I can say, spotless, I can say, which has been cheating free and issue free. So this year it is very disheartening that this type of issues students are raising. So we can send mail to the authorities. Imran has sent mail to the authorities. You can also send mail to the authorities. You can share the screenshots of the Reddit post. You can find many Reddit post. Okay, I can show you some Reddit post. Let me show you. Let me just show you some Reddit post. You can see here. Is it visible to everyone? Yes, sir. Okay, so you can see these Reddit posts. You can see on this Reddit post there are 554 these many upvotes. There are 182 comments on this Reddit post. You can see cheating in gate center using phone. A student is saying, "I had second shift. I saw a guy behind me using phone Chat GPT to answer. Even the invigilators were just sitting at the end of the row doing nothing. The guy brought the phone in his hoodie because the checking system at the center was very, very low. The security was just asking, literally only asking the student that they have brought anything. At the end of the exam, I said, so this student is saying that I told the invigilator about all that, and she started panicking. The invigilator started panicking instantly and told me not to tell about it to anyone outside. Now, why didn't I said anything during the exam? Because the guy is from my college. What other actions can I take to ban that guy? Should I write a mail to the IIT Guwahati about this? I know his system number and lab number. So can I do anything? I mean, like, how such irregulations are even allowed? I'm literally done with all these corruptions. See, this screenshot we have taken from the Reddit. If any gate authority want to check the legitimacy or validity of this claim, then maybe you can talk to this student. Okay, maybe this student might have sent you mail. If this student want to come, because on Reddit, of course this student is anonymous. But if this student, we request this student that if your claim is legitimate, if your claim is valid, if you are like strong that okay, whatever I am saying that is 100% true, then please drop a mail to the authorities. Please tell them that you can talk to me, the authorities, you can talk to me, I will tell you that this happened. Maybe they can take some action. Okay, maybe they can check the CCTV webcam, something they can do. If there is something to do, they can do. Otherwise, of course, if there is nothing to do, then I don't know what they will do. But if there is something, some action they can take, maybe they can verify it. Of course, not blindly take action against anyone. Of course, you must verify, you must be 100% sure that it happened. So but this type of experiences students are sharing all over the social media. You can see students are also writing. You can see students are also writing the exam center, the city, the state. You can see this was another post on the Reddit. You can find, you can see this post also has 60 comments, 230 likes, 2 230 upvotes. You can see full on cheating was going on. Invigilators were chilling, sitting okay their chair. They weren't even bothering to roam. Basically, they were not even roaming around the room. You can see four or five guys were literally group studying while the exam was going on with no fear. They faced no consequences. Okay, so you can see this type of experiences students are sharing. Cheating in some of the centers. This is another post on the Reddit. You can see some of the center were compromised. You can see this student is saying that one of the guy whom I know went 2000 kilometer for gate exam just because the center was compromised. See, we are not saying that all these claims are legitimate or all these claims are valid. We are not saying any of these things. We are just making sure that the authorities get to know what kind of experiences students are sharing. Like, you cannot just say that okay, nothing happened. You If you care about the students hard work, then maybe you can talk
I'm talking about the authorities. Maybe you can discuss among yourselves, and maybe you can try to take some action. If there is some action can be taken, maybe CCTV you can check, webcam you can check, if there is something. Or maybe for the next year you can put jammers. At least you check at the entry, you check whether the student is carrying some electronic gadget or not. At least you frisk, uh, there was no frisking this year. Maybe you can check next year. You can put jammers. There are many things to do. If you are conducting the gate exam, if it because it is about 1 year 2 year, it's about the career of the students. At least you make sure that the webcam is working. If at any level, if one thing is working at any level, then all these things will go away. But at every level, if there is a mistake, if at every level if there is a, I can say, carelessness, then it's very disheartening. So you can see these are some more screenshots. You can see this is another post from the Reddit. You can see 122 upvotes are there, 55 comments are there. You can see literally, bro, everyone is cheating. Check, you can see checking is so relaxed, like no scanning. Those who did from their mind how they are going to crack the exam. So you can see this type of all these screenshots I have taken by just searching, cheating gate on the Reddit. You just search on the Google, you put cheating gate, okay, and then this type of Reddit post you will see where students are talking. So you can see this is another, you can read this, and this is another. You can see, will CCTV check be employed? Were all the CCTVs working? So overall, all these screenshots and all these students, and these are some, I can say. You can see in the chat also, in the live chat also, students are discussing. In the live chat, a student is saying no webcam in our center. So you can see one very good suggestion, a student has given. So let's talk about it. A student is saying that all they have to do is just check the scribble pad. So if someone has used, let's assume, if there is some people who have used chat GPT or AI, then definitely their scribble pad will be almost empty, right? Almost empty the scribble pad will be, because why will they write on the scribble pad? So this suggestion a student has given. I think this type of common sense suggestions, if the authorities are very serious, then they have the scribble pad, right? They have all the scribble pad. We submit the scribble pad, so they can check the scribble pad easily. They can check if some scribble pad is, let's assume, almost empty, maybe only 1 2 pages are used, almost empty scribble pad, and there is no calculation. Let's assume student has just written the answer, maybe on the scribble pad, they, without calculation, the student has just written the answer. Okay, question number 1 answer B, question number 2 answer C comma D, something like that. So if there is no calculation on the scribble pad, and still if the student is getting, let's assume, good rank, maybe within top 1000, maybe within top 2000, if the student is getting rank and there is no calculation, then it's very clear that this student has definitely used some AI. So this, you can see, if you just talk to the students, if you are just serious, then this type of ideas you can easily get. This brilliant idea someone has suggested, you can see, let me pin it. So where is this idea? uh, in the chat, actually, someone has written this. They just have to check everyone's scribble pad. Yes, okay, I found it. Let me pin it. See, this is a brilliant idea. Of course they can do it. Okay. Okay. So thank you Imran, thank you Mona Lisa, thank you Sornava for joining सर us in सर this session. लास्ट में Yes. सर एक बात सर, और हाँ, सर tell me. अब तो आईआईटी गुवाहाटी क्या करेंगे वो तो हमें पता नहीं, कैसे जस्टिस देंगे। तो फिर बात है कि जो पीएसयूज मतलब इस बार जो लाइक एनआईसी जो जिन जिन लोगों ने बोला है कि गेट के थ्रू मतलब लेंगे, तो अगर वो खुद का एग्जाम कंडक्ट करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, आई थिंक, ओनली फॉर दिस, एटलीस्ट फॉर दिस ईयर। Yes, yes, Imran. Actually, this is really very strong point you have suggested. Till last year, till 2025, NILIT, or I can say NIC for the recruitment of scientist B, scientific technical assistant A. Basically, NIC has conducted NILIT exam. So
that was a separate exam. But this year for 2026, they are saying that we will recruit through the gate exam. I request I request NIC that please take your own exam. It is it will serve two purpose. The first purpose, that you can see students are concerned about how the gate 2026 exam was organized. So about the management, about the organization of gate 2026 exam, students are also already students are concerned, they are disappointed, they are talking about it all over the social media. So that is one thing. And second purpose, that till last year you were giving them another opportunity. You were giving them another opportunity. You were giving those students another opportunity. That is my is my internet, am I audible? यस सर, यस सर। तो बीच में थोड़े देर के लिए हुआ था लाइक। Okay, now it's fine. Okay, so see, the first purpose I discussed, Imran, that was audible. यस सर, यस। Okay. And the second purpose, see, till 2025, students were getting more chances. If their gate exam goes bad, then they were getting more chances. They can appear for the NEET exam, they can appear for the ISRO exam, BARC exam, okay, many other exams, DRDO exam. But this year, NIC has already told that we will recruit through the gate exam. So what we can do about it? Maybe we can send them mail. We can tell them about these two purposes. These are, I think these are quite strong purposes, that they can listen to the students, that okay, because of these two things, maybe they can conduct their own exam. So it will give more, I can say it will give another chance to those students whose gate exam did not go well. They can still, crack many other exams. If everyone, if every PSU, if every government job, if every institute starts, recruiting through the gate exam, then it will become, I can say it will become like, if your one exam, if your gate exam goes bad, then everything goes bad. Also, if gate exam gets compromised by few students, let's assume, then you can see that everyone, in for all the opportunities, you will get, I can say, disadvantage. So so maybe students, I request all the students who are concerned, like Imran is concerned about NIC recruiting through the gate exam this year for 2026, we can mail them, we can send a mail to them, to the NIC, to the NEET. I think we can we can find their email ID, and we can drop a mail to them that please recruit just like you were recruiting till last year. So anything else, Imran, Mona Lisa, Swarnava? Okay. So, okay. So, thanks to everyone for joining us in this session, and thank थैंक you, यू सर Imran. हमें प्लेटफॉर्म देने के लिए, कि किसी Yes, और ने मतलब कोचिंग ने ये सब नहीं दिया हमें एक अपॉर्चुनिटी की स्टूडेंट के साथ, मतलब कोई अभी तक स्टैंड नहीं लिया किसी ने, किसी फैकल्टी ने, किसी दूसरे कोचिंग ने। तो थैंक यू गो क्लासेस फॉर इट। thank you, Imran, for joining us. And I have seen your post on the LinkedIn from the day you attempted GATE 2026 exam. I think you have written, 3 4 posts you have written so Yes, sir. far, and you are continuously raising your voice. Students are continuously raising their voice on the Reddit anonymously, but I think that you just you drop mail to the authorities, and you can share your experiences. There is nothing to fear. Okay, see, you are not we are not putting any blame on anyone. We are just telling the authorities how the exam was conducted, the reality of exam centers, what actually happened. This is what we are sharing with the authorities. Okay. And if authorities are serious, they can do some checking, they can check the scribble pad, they can check. Otherwise, why are you collecting the scribble pad if there was no purpose? Let's assume, okay, once you collect the scribble pad, if they are useless, then why are you even collecting the scribble pad after the exam? What is the purpose? So सर very अभी simple. शायद वही एक मतलब जेन्युइन मतलब वे होगा, बाकी तो मतलब सीसीटीवी कैमरा वो सब तो काम ही नहीं कर रहा 60 to 70% सेंटर्स में। तो Yes. कैमरा के तो उससे नहीं होगा, तो स्क्रिबल पैड वाला आइडिया से ही हो सकता है कुछ। Yeah, this is a brilliant idea, because if
let's assume we only check the scribble pad of top 2000 top 3000, maybe. Okay, in worst case, let's assume top 5000 students. Okay, if the gate authorities check the scribble pad of top 5000 students, then also, if you let's eliminate, if you eliminate, 10, maybe 15, 10, 40, I don't know how many, but let's assume you eliminate 10 or 20 students, that their scribble pad is empty, or they have written the answers without calculation, they have just written the answers on the scribble pad, otherwise the scribble pad is empty. If you eliminate 10, 20, 50 students also, then you can see those many deserving students will get the better rank, I can say, they will get the opportunity. So of course, if you are collecting the scribble pad, why not use it? Okay, if you are putting the webcam, why not use it? If you are putting the cctv camera, why not use it? These things were put so that after post gate exam, if this type of issue comes, then they can take some action, right? Otherwise, what is the purpose? Okay, so I request all the students, if you have faced all these things, then you can send mail to the authorities, you can put comment under this video, so that this video can reach, and you can share your opinion on the LinkedIn, like Imran has shared. Okay, on other platforms also, there are many other platforms where you can share your concerns. There is Twitter, there is LinkedIn, there is Reddit. Already on the Reddit, students are sharing their concern. Okay, so just make sure that that the authorities get to know about it, so that maybe they can take some action if there is any action to be taken. Okay, so thank you everyone. Thank you Imran, Mona Lisa, Swarnava for joining Thank you, us in sir. this session. And Thank you, thanks to sir. all the Sir. students for watching this video. Yes, yes, Swarnava. Anything? Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, okay, Swarnava. Okay, Mona Lisa, thank you for joining us. Okay. So thank you everyone.